Morning students. So today we are going to discuss that how evaporation it causes cooling. ठीक है? So only just 4 or 5 lines we'll do this from another book, and rest of the chapter we are doing from the NCERT book. So I'm just teaching you this just to make it easier for you so that you can understand the things easily. See what they have written here. The cooling caused by evaporation. अब वो कहते हैं कि जो आपका evaporation है, evaporation has cooling effect. ये माना जाता है कि evaporation has cooling effect, कि जहाँ से भी evaporation हो रही है, पानी जो है water है जो वो evaporate हो रहा है in the form of water vapors, it will leave the surface cool. वो उस particular जगह को क्या कर देगा, cool रहने देगा. It will become cooler. ठीक है? तो then see, so what happens actually, कैसे हो रहा है ये? See, the cooling caused by evaporation, जो भी cooling हो रही है by evaporation, it is based on the fact that when a liquid evaporates, जब कोई भी liquid evaporate करता है, it draws means takes away, it takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. That means अगर let's take example, if we have spilled the water on the floor, ये floor है, this is floor, and we have spilled the water on the floor, तो पानी गिरने के बाद क्या होगा, it will evaporate. But how it will evaporate, it will take the latent heat of vaporization from the floor. जिस भी चीज़ के वो टच में है, it will take the heat energy from that particular surface, and then the particles they will evaporate. So by losing this energy, this anything gets cooled. अब water particles ने क्या किया, they took the energy from the surface, surface of the floor, वहाँ से उसने उस energy को gain किया. जब particles ने gain किया, then we'll say the floor has lost that energy. तो इस वे में क्या हो गया, वो जो आपका फ्लोर था that gets cooled. ठीक है? So next, okay, next we'll discuss from the book. Okay, so next is what happens when you pour some acetone or your nail polish remover on your palm. तो क्या होता है, the particles they gain energy. आपके हाथ पे जब वो हमने acetone रखा है, तो particles of the acetone they will gain energy from your palm. आपके palm में in our body we have heat energy. So from our palm the particles they will gain heat energy from your palm or the surroundings, and they will evaporate, causing the palm to feel cool. So this is question number 1. I'll send you the questions based on this topic. Okay, then next reasoning question is there. After a hot sunny day, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, तब after a hot sunny day what the people do, they sprinkle water on the roof or open ground. मतलब लोग क्या करते हैं, either they will sprinkle the water, पानी फेंकते हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है, that is sprinkling of water on the roof or open ground. क्यों ऐसा होता है, अब जब वो पानी गिराएगा, the surface of the roof or the surface of the floor, they are right now, like at that time the surfaces are too hot because of the sunny day. So when they will pour water, the water will take the latent heat of vaporization from that surface. उस surface की latent heat of vaporization वो absorb कर लेगा and it will evaporate, keeping your surfaces cool. Hot surface को cool कर देगा. ठीक है? Then what happens? This is also another question. Why should we wear cotton clothes in summers? So during summers we perspire करना मतलब sweating होना. ठीक है? So people they do sweating, they perspire more because of the phenomena of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid they gain energy from the surroundings or body surface and change into vapors. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. So cotton जो है that is a good absorber. अब यहाँ पे ये क्या समझाना मांग रहा है हमें, what he is explaining us, कि when we sweat, जब हमें sweating होती है तो what happens,
जो वो particles हैं they will get absorbed on the cloth which we are wearing. Let's take example, we are wearing cotton clothes. तो cotton clothes जो है they are good absorber, of water. ठीक है, और जब once they will absorb the water और the sweat from the body, तो वो जो कॉटन क्लॉथ है वो क्या करेगा, इट विल गेन द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, हीट एनर्जी हमारी बॉडी से हीट एनर्जी लेगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड दैट स्वेट विल इवेपोरेट. वो स्वेट क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, कीपिंग योर बॉडी कूल. सो दैट्स वाई वी आर ऑलवेज प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर्स. अगर आप नायलन डालते हो, लेट्स टेक एग्जाम्पल, आप मुझे बोलते हो मैम वी आर व्हाट इफ वी वियर नायलन और सिंथेटिक क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स आर नॉट गुड एब्जॉर्बर्स. अगर आपको स्वेटिंग होगी तो यू विल फील कि स्वेटिंग जो है वो जो स्वेट है दैट इज़ नॉट गोइंग into your cloth, but it is remaining there on the body. तो क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. when it will not absorb, it will not evaporate. So cotton clothes, what they do, they will absorb your sweat and then they will evaporate that by taking the latent heat of vaporization from your body. ठीक है, so this was the reasoning for it. Next is, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ठीक है, अब ये देखो आप क्या होता है. सपोज वी हैव टेकन आइस कोल्ड वाटर, हमारे पास एक आइस से भरा हुआ, वी हैव अ ग्लास. ठीक है, सपोज दिस इज आइस. सो व्हेन यू विल कीप दिस ग्लास फिल्ड विद आइस इन योर रूम, और रूम टेम्परेचर पे आप उसको रख दोगे, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, यू विल सी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं. नाउ you must be wondering कि water droplets कहाँ से आ रहे हैं. they are not coming from inside of the glass, अंदर से नहीं आ रहे हैं. वो कहाँ से आ रहे हैं, they are coming from the outside. अब होता क्या है देखो, in our atmosphere we have lot of water vapors around. ठीक है, and why they are in the form of water vapors, because of higher temperature. उनका water droplets का temperature जो है that is very much higher, that's why they are in the form of water vapors. Now when we have kept a glass filled with ice, तो इसके यहाँ आसपास जितने भी वाटर वेपर्स हैं, इस ग्लास की वजह से उनका टेम्परेचर जो है दैट विल बिकम लोअर, वो कम होता जाएगा टेम्परेचर. व्हेन देयर टेम्परेचर विल बिकम लोअर, दे विल स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट. दे विल स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम गैशियस टू लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे. एंड देन व्हेन दे विल चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, दे विल स्टार्ट स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ द ग्लास. ठीक है, यहाँ पे आते जा रहे हैं और यहाँ पे इनका टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, एंड दे आर चेंजिंग टू वाटर ड्रॉपलेट्स. सो सी व्हाट दे हैव रिटन हियर, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact. अब जो एयर में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, they will come in contact with the cold glass of the water. They will lose energy. उनका टेम्परेचर जो था, when they were not near the glass, temperature was higher, but when they will come closer to the glass, they will lose energy. And then they get converted to liquid state. पहले वो gaseous state में था, अब वो liquid state में change हो गया, which we see as water droplets. Fine. So I'll send you the assignment after this. So you have to do all the questions in your chemistry notebook. Fine. So even these questions will be covered in that. Okay.